annotation skills. Wait a minute. I will disable the annotations. So please try to control your annotation skills. Just a second. I will share the screen again. See, our mind is so much troubled by all the senses. I hope all of you know the senses. There are 5 senses, that is eyes, nose, ears, tongue, and touch, the skin sensation. ये 5 sensation होते हैं main. And these 5 senses, they are all the time troubling us, troubling the mind कि मुझे चाहिए चाहिए चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए. ये 5 senses से क्या होता है, ये सब मांगते रहते हैं. And if we go on providing them, what happens is mind becomes disturbed. माइंड इतना डिस्टर्ब हो जाता है कि माइंड बोलता है मैं इसको प्रोवाइड करूं कि उसको प्रोवाइड करूं. लाइक फॉर एग्जांपल, यू आर वेरी हंग्री एंड यू सी or you are going in a train and there is a bhaji pav vada and other things which are going on in the train. Have you seen this bhaji vada and bhel wala train mein aata hai? Please raise your hands in Zoom. Those who have started camera, they can raise like that also. Have you ever seen? Yeah. Yes. So those bhaji vada, yes. Okay, so these many people. So those bhaji vada or we can say bhel wala, what they do is, उनको अगर बेचना है उनका item, तो what they do, they bring all the things near you. आपके नजदीक लाएंगे, आपके नजदीक से जाएंगे वो, so that उसका जो smell है वो आपको आ जाए. And जैसे smell आता है, then the person immediately, without thinking anything, ए भजी वाला रुक जा, ए भेल वाला रुक जा, ऐसे उसके माइंड में एक कंट्रोल, उसका कंट्रोल हट जाता है. सो हाउ दिस हैपन, इसके पीछे स्टेप्स क्या है? फर्स्ट स्टेप इज सेंस. इसने क्या किया है, वो स्मेल लिया है, वो सेंस माइंड को बोलता है कि मुझे वो चाहिए करके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ एनी पर्सन हु वांट्स टू कंट्रोल हिज माइंड एंड बी रिमेन हैप्पी इन दिस वर्ल्ड, first thing he has to do is he has to control his senses. If we don't control our senses, then what happens? We cannot do anything significant in this world. हर जगह पे क्या होगा, जैसे आप सपोज ट्रेन में पढ़ाई कर रहे हैं और बीच में ही दूसरा चीज आ गया, ट्रेन में बात कर रहे हैं बीच में दूसरा चीज आ गया, वैसे हम लोग डिस्टर्ब रहेंगे हरदम. So at the end I will try to give some techniques also. Yes, I will try to give some techniques also by which you can control things, and I will also try to give some basic instructions on how we can do the things. So before starting the session, first of all, we'll start with small prayers. So all of you repeat after me. At your place, you can repeat after me. Om Agyan Timirandasya, Om Agyan Timirandasya, Jnananjana Shalakaya, Jnananjana Shalakaya, Akshurun Militam Yena, Akshurun Militam Yena, Tasmai Shri Gurave Namaha, Tasmai Shri Gurave Namaha. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Okay. So why I have chanted these prayers is to bring auspiciousness in our seminar. By these prayers, we actually pay our respects to our teacher. Om Agyana Timirandasya. I am fallen in darkness, and Jnananjana Shalakaya. That my teacher, he has brought torchlight of knowledge. With the torchlight of knowledge, he has given me, he has opened my eyes. Tasmai Shri Guruve Namah. To such teacher, I my respectful obeisances. So first of all, anything we do, we should have respect for our teacher, and by that we will get the knowledge. Okay, so let's start with our session. So these are the 4 things we are going to see in today's topic, today's seminar. First one is attraction principle. Then second is boss, how God is boss and we are das. Okay? Dharma of soul, what is our actual nature, what things we like and what we actually should do, and are we part of God or are we God, or what is the condition. Okay, so we are going to see these topics. These are very important topics, because if we know these topics, we will be able to function in our life properly. Okay, how? So first thing is, in this world, every
person, like I told you example of that bhaji vada and all those things. Okay, every person, when he sees any important thing in this world, for example, any beautiful thing, okay, so he gets attracted to that. Right? He gets attracted to something like I told you about bhaji vada, and they are part of the sense object for our okay, thumbnail. A good thumbnail कोई आ जाता है सामने. You have an exam, even though you are very busy, but still you click on that thumbnail. Right? So actually we get attracted to many things, and then if you get attracted to something, like for example, some छोटा child है, वो बोलता है I love my mother. ठीक है, he likes his mother. Or if somebody is very beautiful, we get charmed by the beauty. Right? So we all get attracted in this world to various beauties, to various people, various objects. Okay, so there is one principle which is common principle which is seen is that we get attracted to something, and then after getting attracted to that thing, we develop love for that thing. Okay, and then after developing love, when we be with the person, when we eat that thing, whatever, like for example rasgulla, okay, rasgulla or gulab jamun, you see it, okay, you develop attraction, then you love it or you eat it, you liked it very much, and that gives you happiness. This is like 3-step formula. We get attracted, we love the thing, and then we get happiness. So but in this world, everybody is attracted to something which is very beautiful, or somebody who is very strong, having powerful biceps, triceps, powerful body. Like that's why we see nowadays सारे movies में, हर movie में, if you want to become hero nowadays, you require 6-pack abs. वो आपको चाहिए, तभी आप hero बन सकते किसी भी movie में, correct? Or people get attracted to somebody who is very wealthy. Why is it so? हमने कभी सोचना चाहिए why we get attracted to these things? Because answer is that originally these things are present in God. Yeah, these things are present in God. That's why we actually get attracted to these things. Otherwise, why would we get attracted to such kind of things? We have to see that. We have to understand. हमें सोचना चाहिए कि मुझे वो चीजें अच्छी लगती है. So because God is very powerful, ठीक है? God is very beautiful and He is having a lot of what to say, His own opulences, which we are going to discuss now. Have you ever thought about the word Bhagwan? ठीक है, हमने बहुत बार ये वर्ड सुना हुआ है अलग अलग जगह से. भगवान, एक्चुअली भगवान क्या है? सो भगवान ये वर्ड, ये डेफिनेशन किसने दी है? सो द पाराशर मुनि has given this definition in scriptures that who is Bhagwan or what is Bhagwan. So Parashar Muni, he tells that somebody who is full in these 6 opulences, उसके अंदर ये 6 चीजें full में चाहिए, full में, part में नहीं चलेगा. One who is beautiful, he has full wealth, knowledge, fame, strength, renunciation, ये सारी चीजें है उसमें. Then that person can be called as Bhagwan. ठीक है, suppose आप बोलेंगे और I say, oh I am Bhagwan, then we have to ask, you have to ask one thing, that are you beautiful? I say no, I'm not beautiful. Then are you having wealth? I say I may have some wealth, but then if I have some wealth, what about the other wealth? बाकी लोगों के पास है ना, some person might have wealth more than what I have. Knowledge, I don't even remember what I ate yesterday. अपना तो condition ऐसा है कि we don't remember what I ate yesterday. Then what type of knowledge and what type of memory we have? So fame, वगैरह, all these things. So God, actually, we get attracted to God because He has all these 6 things. See, we will take questions and at the end. If you have any question, आप उसको mind में रखिए और आप मुझे chat type करके डाल दीजिए, ठीक है? So at the end we will take those questions. और actually आप बीच में type करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा difficult हो जाएगा. End में ही आप वो questions पूछिए, we will give time for that. Okay? But you have to be very attentive, get the essence of this topic. That is very important. कि ये topic आपको systematically एक conclusion पे लाता है. At the end we will decide some conclusions. Okay? So we are part of God. That's why we also have these things, but in a minute portion. बोलेंगे sir, I also have, so for example Bill Gates बोलेंगे I have crores and crores of rupees, billions of dollars है मेरे पास, तो but he has, okay, but it is in minute portion. सारा gold है, कोई बोलेगा मेरे पास gold है, gold kg gold है, 2 kg gold है. God, gold mine gold God का है, ठीक है?
gives to us. That is another thing. He gives the things to us. जो money, जो beauty, nature का जो natural beauty है, nature का जो सारे minerals and rubies, pearls, ये सारी चीजें they're all part of God. His property. He gives to us. So bhaga and one. याद रखना है. Remember this. Bhaga means opulence and one means one who possesses. हम बोलते हैं ना धनवान, जिसके पास बहुत धन है उसको बोलेंगे धनवान. तो वान शब्द का मीनिंग क्या है? वन हु possesses. सो भगवान, ये वर्ड भगवद्गीता उवाच धर्म क्षेत्र वाले के बाद में, बट श्री भगवान उवाच ऐसा वर्ड आता है, ऐसा भगवद्गीता में आता है 28 टाइम्स भगवान उवाच. ठीक है. सो दिस एंड आल्सो दिस भगवान वर्ड्स कम्स in Srimad Bhagavatam 140 times भगवान वर्ड आता है. तो वन यानी possession, कौन possess करता है? तो somebody says I am लखपति, I am crorepati, कोई बोलता है I am अरबपति. But then when we talk about God, he says I am Lakshmipati. Okay, he's Lakshmipati. Lakshmi, Mother Lakshmi is goddess of fortune. तो जो भी आपके पास है सब कुछ, हम तो वी प्रे टू मदर लक्ष्मी, है ना, ओ मदर लक्ष्मी मुझे दे दो, बट वो मदर लक्ष्मी से हमें जो मिल गया उसमें हम प्राउड हो जाते हैं. बट मदर लक्ष्मी इज एक्चुअली हुज वाइफ, दैट इज नारायण और कृष्णा. ठीक है. तो ही इज लक्ष्मीपति. देन एनीथिंग यू सी, लाइक फॉर एग्जांपल ब्यूटी ले लेते हैं हम लोग. ठीक है. सम पीपल आर वेरी ब्यूटीफुल इन दिस वर्ल्ड, बहुत ब्यूटीफुल है, और इतना ब्यूटीफुल है वो लोग कि ऑल पीपल गेट अट्रैक्टेड, दे बिकम देयर फैन. बट इफ यू सी, beauty does not last for long. ठीक है. Some people they are very wealthy in this world, बहुत wealthy है, अपना खुद का चार्टर्ड प्लेन है, बड़े बड़े बंगलो है. Some people like Einstein, high level of IQ, बहुत knowledgeable है. And some people, you know, बहुत strength है, बहुत powerful है. And some people they have huge fame. सचिन तेंदुलकर है, महात्मा गांधी है, लोग जान देने के लिए रेडी थे महात्मा गांधी के लिए. अगर आप फ्रीडम फाइटर का स्ट्रगल करते हो, रीड करते हो, तो आपको पता चलेगा पूरा इंडिया एक हो गया था ओनली फॉर एक्चुअली फॉलोइंग महात्मा गांधी. दैट वाज द कंडीशन. ठीक है. और फिर रिनंसिएशन का हिंदी में मीनिंग आएगा वैराग्य. सब कुछ होते हुए भी वैराग्य होना. वैराग्य यानी क्या? उसको बोलेंगे हम लोग, यू नो, डिटैचमेंट, रिनाउंस होना, यानी वो चीज से अटैच नहीं होना, वो चीज के बिना रह सकते हैं, लाइक दैट. ठीक है. दैट इज रिनाउंसिएशन. ये 6 ऑपुलेंसेस है जो गॉड के होते हैं, 6 ऑपुलेंसेस. और अगर हम ये देखते हैं, ये ऑपुलेंसेस इस वर्ल्ड में है, इसका मतलब ये ऑपुलेंसेस गॉड में होने चाहिए. एग्जांपल आपको याद रखना है. सी दिस एग्जांपल इज अ टी, और एक टी का रिफ्लेक्शन वाटर में आपको दिख रहा है. तो ये जो वर्ल्ड है, दिस वर्ल्ड इज कंपेयर्ड एज रिफ्लेक्शन ऑफ दैट स्पिरिचुअल वर्ल्ड. इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में नेक्स्ट सेशन में हमें है, बट दिस वर्ल्ड इज reflection of spiritual world. So the property, the power what we have is a reflection, minute way that we have of God. God का एक छोटा सा चीज हमारे में है, that is a minute reflection. ठीक है. For example, छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा क्या करता है, कभी कभी एक अंधेरा घर है. ठीक है. अंधेरे घर के अंदर वो क्या करेगा, एक कांच का टुकड़ा लेगा, लाइट को ऐसा ये करेगा बाहर, घर के बाहर सनलाइट को इस तरह से रिफ्लेक्ट करेगा और वो घर के अंदर डालेगा. ठीक है. तो रिफ्लेक्ट करके वो सनलाइट जो घर के अंदर जा रही है, तो घर के अंदर इल्यूमिनेट हो जाएगा. करेक्ट. बट एक्चुअली इज दैट द एग्जैक्ट पावर ऑफ सनलाइट? नहीं. एग्जैक्ट सनलाइट, सन कितना पावरफुल है ना. तो सिमिलरली वी आर जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ गॉड, रिफ्लेक्शन ऑफ हिज पावर. वी आर जस्ट समथिंग, यू नो, माइन्यूट पार्टिकल हम लोग है. हम वी आर माइन्यूट थिंग्स. So Lord is so beautiful. He said about Krishna's beauty that the most beautiful woman you might have ever seen in this world, most beautiful actress, और जो world कौन सा वो होता है, मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, मिस क्वीन, मिस इंडिया, whatever, ये जो most beautiful है, they are like cockroaches in front of अप्सरास which are in Indra's heaven. इंद्र के हेवन में जो अप्सरा है या जो celestial women है, उनके in front of they like in front of these women the earthly beauties are nothing, cockroaches. ठीक है. And जो अप्सराएं है, they are nothing in front of women or the beauty of spiritual world. And it is said that the Lakshmi and the other associates of Mother Lakshmi, they are so beautiful that the Apsaras, they are nothing in front of them. And it is said that thousands and thousands of Lakshmis also cannot
compare with beauty what Krishna has. That is beauty of Krishna. So one poet says that if you are attached to anything in this world, don't go to Vrindavan or don't go to Vamshi Ghat. I was thinking, ऐसा क्यों बोल रहे हैं ना, spiritual है, Hindu person है, फिर कोई बोलेंगे I'm devotee of Krishna. He should say go to Vrindavan, go to Mathura, but he's telling don't go there. So I was thinking, why he's telling like that? Then he told, he said, if you go there and if you see Krishna's beauty, then you will not like any other beauty of this world. That is actually beauty of God. So we cannot compare. और भी बहुत सारी चीजें डिस्कस कर रहे हैं, but we have to go ahead. ठीक है. Another thing I remember about beauty of Krishna is that when it is said that when the animals used to see beauty of Krishna, they used to stop at one place. Okay, they cannot move only. They continuously used to gaze at Krishna, and the bees, the birds, and everybody used to stand still when Krishna used to walk by. It was so beautiful. The wealth of God we already discussed. Okay? Unlimited wealth, a universe, a gold mines, a sea, everything, whatever in this universe, right from the oxygen we are breathing, yahan se leke, everything belongs to God. Okay? That is His beauty and His knowledge. So we know that Krishna spoke 45 minutes के लिए. Krishna spoke Bhagavad Gita in 45 minutes. Correct? 45 minutes में कृष्णा ने भगवद गीता बोली, and even now आज तक people are actually doing some PhD on Bhagavad Gita. लोग PhD करते हैं. Even now people are studying it and they cannot put everything in head. Okay? So that is the knowledge which God has. And ऐसा नहीं कि कृष्णा prepared. कृष्णा को पहले दिन पता था कि अरे कल अर्जुन ऐसे क्वेश्चन पूछने वाला है बैटलफील्ड में और अर्जुन बोलेगा कि मैं फाइट नहीं करूंगा कृष्णा, and then कृष्णा has to speak भगवद गीता. ऐसा नहीं था कि he prepared. On spot he spoke. गीतोपनिषद बोला जाता है उसको, सारे उपनिषदों का सार, सारे वेदों का सार, it is भगवद गीता. So whenever I give classes, I told my students that first thing आपको क्या करना है is you have to actually take भगवद गीता and start reading it. This is the first thing. आप पूरे वर्ल्ड का सारा नॉलेज ले लो, इंजीनियरिंग कर लो, एमटेक कर लो, सारे अलग अलग जो भी कोर्सेस है सब कर लो, बट टिल द टाइम यू डोंट रीड भगवद गीता, यू डोंट नो व्हाट टू डू विद दैट कोर्स, हाउ टू लिव इन दिस वर्ल्ड. Right? So that knowledge is very important. Then strength, he picked up Govardhan Hill and he killed so many asuras. Krishna says that परतरम नानित किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदं प्रोतम सूत्रे मणि गणाइवा. He says that everything is resting upon me. सारा यूनिवर्स है, all these planetary systems and everything in this world is resting upon me. Who can say that? So that is the strength of God. सारे प्लैनेट जो घूम रहे हैं ना, we say gravitational force की वजह से, करेक्ट. अर्थ मूव कर रहा है सन के अराउंड में, या मून मूव कर रहा है अर्थ के अराउंड में, या जो भी प्लैनेट्स एक दूसरे के नजदीक है, that is because of attraction or some forces in between, है ना. तो ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर एग्जांपल. तो ये जो फोर्स है या एनर्जी है, ग्रेविटेशनल एनर्जी, तो ये एनर्जी यानी किसका एनर्जी? देयर शुड बी सम एनर्जेटिक जिसका एनर्जी है, तो दैट एनर्जी बिलोंग्स टू गॉड. ठीक है. एंड फेम, even now we are discussing after 5000 years, Krishna came on this earth for some time, for 5000 years. Okay? Before 5000 years before he had come, till now we are discussing so many things about him. Even now people chant his name, even now they are remembering him. 5000 years बाद में भी, that is his fame. 100 साल पहले कोई आदमी था, हम उसको जानते भी नहीं अभी तक. 100 साल पहले वो बहुत अच्छा हीरो था, लेकिन अभी कौन जानता है? Who takes his name right now? And renunciation, vairagya. See, even though Krishna is God, but still how he behaves with his devotees, you see. Sudama ke, he washed his feet and he used to bring sandals for his father when he was very small child. ये सारे qualities है God के. ये qualities God में कैसे? Full. तो भगवान और God is one who is full in 6 opulences. ठीक है. और ये opulences minutely इस वर्ल्ड के लोगों में भी दिखते हैं. Okay. So Krishna says, यद्यद् विभूतिम मत सत्वम श्रीमद् ऊर्जितम एववा एवा गच्छत्वा माम मम तेजो अंश संभवम. It is that ये जो भी इस वर्ल्ड में दिख रहा है अर्जुन, know all that opulent, beautiful and glorious creation, in but a spark of my splendor. छोटा सा एक अंश है मेरा, Krishna says. Okay, that is the attraction principle. So if you have question that why I get attracted to things, because they are somewhere they are connected to God. And as a soul, we are part of God, correct? So we get attracted to God. We don't get attracted to worldly things if there is no connection, okay, with God. Then God is boss and we are das. Okay. This topic actually very important. See, this is Vaikuntha. Vaikuntha,
where there is like, this is spiritual world where there is unlimited enjoyment, unlimited happiness, which is not in this world. So God is supreme, and his souls, his eternal servants are always with him. Eternal parts are always with him. तो एक इस वर्ल्ड में भी, इस वर्ल्ड का भी ऐसा प्रिंसिपल है, आप देखेंगे बहुत सारे लोग मिलके, प्लूरल सबऑर्डिनेट्स टुगेदर सर्व वन सुप्रीम. बहुत सारे लोग, लाइक फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स है, क्या करते हैं, प्रिंसिपल का रूल फॉलो करते हैं, एंड देन दैट प्रिंसिपल व्हाट ही गिव्स देम एजुकेशन, ट्रेनिंग, ही गिव्स देम डिग्री. मिलके करते हैं, गेट. सिमिलरली कंपनी में एम्प्लॉयज होते हैं, एम्प्लॉयज सर्व करते हैं सीईओ के कोई प्लान्स को, है सीईओ जैसा बोलता है वैसा वैसा वो करेंगे सब लोग. देन सीईओ becomes happy, he gets money, he gives them money. What he gives them salaries, perks, facilities, बहुत सारी चीजें देता है उनको. तो प्लूरल सबऑर्डिनेट्स है, सिंगुलर को सर्व करते हैं, that singular gives him them. Citizens, they align by the laws of prime minister, and then prime minister gives them facilities, social facilities, some welfare things, सारी चीजें देते हैं. Similarly, नित्यानाम चेतनस चेतनानाम, it is said that eko bhunam yo vidyati kaman, that there are many souls, okay, and all of them, they should serve one God, should serve God. Then what they get is eternal happiness. They receive eternal happiness. This world is actually full of miseries, at every time there is birth, old age, disease, death, sare miseries hote. We want actually happiness in this world. That's why we are running behind all the things. Some person, he earns money. Why he's earning day night? He's working for money because he knows after getting money, I will do something because of which I will get happiness. So at last, everybody wants happiness, and actually happiness is in service of God. So we should understand that he is our boss and we are das. And if we serve him, we get most thing. So there is a quiz, but we have very less time here, so we'll not be able to go to the quiz. But next time we may do. यहाँ पर क्या है, there is divine and demonic people. दो टाइप के लोग होते हैं, ठीक है. इन दो लोगों में हम थोड़ा सा डिफरेंशिएट करेंगे कि ये दो लोगों का मेंटेलिटी कैसा होता है, ठीक है. डिवाइन और डेमोनिक, आप भी सोचिए इस पे. यू आल्सो थिंक, लाइक फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ठीक है. जो डेमोनिक पर्सन होता है, बोलते हैं उसको, या फिर आसुरी पर्सन, ठीक है. क्वालिटीज में है, जैसे कोई होता है डिवाइन पर्सन, ही हैज डिवाइन क्वालिटीज, और एक होता है डेमोनिक पर्सन, डेमोनिक क्वालिटीज. इफ यू सी इन भगवद गीता 16 चैप्टर, दैवी आसुरी संपद, डिवाइन एंड डेमोनिक क्वालिटी, 16 चैप्टर भगवद गीता का इसी पे, तो उसका इसेंस यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं. तो डेमोनिक rebels against God's law, but the divine person, he actually obeys God's law. डेमोनिक पर्सन है, सिर्फ खुद के बारे में सोचता है, पैसा पैसा मुझे चाहिए, I will try to enjoy. The person who is divine consciousness, he wants to serve selflessly to God, to others. Yeah? The person who is demonic, वो क्या बोलता है, मैं खुद के दम पे खड़ा हूँ, ठीक है, I am a self-made man. But a divine person says, I am grateful to God. See, every scientist हम जिनका नाम लेते हैं ना, most of the scientists, they are actually they accept God. Like for example, Einstein ले लो, न्यूटन ले लो. न्यूटन का एक स्टेटमेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है. He said that मैं एक सी बीच पे, मेरे जो इन्वेंशंस है वो क्या है, तो सी बीच पे थोड़ा बहुत सैंड के पार्टिकल्स की तरह है, ठीक है. गॉड इतना बड़ा है, गॉड इतने बड़े हैं दैट आई ओनली एम कलेक्टिंग सम सैंड पार्टिकल्स, बट गॉड ने इतना बड़ा बीच बनाया, उतने कितनी सारी चीजें उस पर. Even Socrates, even Sri Ramanujan, yeah, all this, सब लोग, all of them are grateful to God. But there are some people, मैं खुद के दम पे खड़ा हुआ, अपन खुद करके बताया सब कुछ, अपने को किसी ने साथ नहीं दिया. Without mercy of God, we cannot lift our hand भी ऊपर नहीं कर सकते. You go to hospital, see paralyzed people, paralysis जिसको हुआ है उसको देखो जाके, हम देखते हैं कि उसका बॉडी, although wants to pick his hand, एक साइड बॉडी का पैरालाइज हो गया. एंड देयर आर, आई हर्ड इन इंडिया मोर देन 10 लाख पीपल, ठीक है, एवरी ईयर पैरालिसिस के से सफर करते इतने सारे लोग. सो एक्चुअली विदाउट परमिशन ऑफ गॉड, आवर बॉडी आल्सो इज नॉट वर्किंग. सो देयर आर सम, लाइक इन आवर एकेडमी, स्टूडेंट आस्क्ड मी वंस, सर कहाँ है गॉड, है ना, कहाँ है, मैं क्यों, व्हाई आई शुड बिलीव इन गॉड. आई सेड, तो विदाउट गॉड ये चल सकता है वर्ल्ड. बोले हाँ सर चल सकता है. तो मैंने बोला हाँ ठीक है, तो कैन यू टेल मी हाउ योर हार्ट इज वर्किंग. बोले सर इट इज वर्किंग, मैं वर्क कर रहा हूँ उसको. सो आई सेड ओके, कैन यू स्टॉप इट फॉर 1 सेकंड, उसको स्टॉप करो 1 सेकंड के लिए. तो ही सेड
वो नहीं हो सकता। मैंने बोला क्यों नहीं हो सकता? बोले सर वो हुआ तो फिर मैं मर जाऊंगा ना। देन आई सेड देन someday it will stop, correct? बोला yes, someday when it has to stop, it will stop. I said there is somebody who is controlling it, बाबा. Due to birth, mother's womb. ठीक है, मदर के वूम में कोई था, somebody comes at 8 months, 9 months, कोई 8, 9.5 months में भी आता है, बर्थ लेता है. But in the womb, how the child develops, that is 100% under the guidance of God. It is not possible for us actually to do that. कोई भी साइंटिस्ट आज तक टेस्ट ट्यूब के अंदर बेबी नहीं बना पाया है, ठीक है? although टेस्ट ट्यूब बेबी कंसेप्ट नाम दिया हुआ है, बट टेस्ट ट्यूब के अंदर बेबी नहीं बनता. zygote is found outside in the test tube, and that zygote has to be transferred in the body of some female, and there the child develops. The child develop female के body के अंदर ही होता है, ठीक है? So without the what we say help of God, we cannot live. No seed will fructify, ठीक है? We can see easily, जो पानी है वो evaporate हो रहा है, evaporate होके cloud बन रहा है, cloud हमारे ऊपर आके पानी हमें दे रहा है, हमारे घर पे रिवर्स में सी वाटर हम तक आ रहा है, ठीक है? दैट इज लाइक हम उसको ग्रांटेड ले लेते हैं, हम क्या सोचते हैं अपने आप हो रहा है. नथिंग वर्क्स अपने आप, कोई चीज अपने आप नहीं होती. हम घर पे आएंगे तो घर पे, आपने पहले भी सेमिनार्स में देखा होगा, घर पे आएंगे खाना बना के रेडी है तो हमेशा नहीं बोलेंगे अपने आप हो गया. मदर ने हमारे लिए बनाया है बाबा, तो सारी चीजें. सो डेमोनिक पर्सन डज नॉट एक्सेप्ट दैट. ही सेज जस्ट डू इट, ईट ड्रिंक एंड एंजॉय. बट डिवाइन पर्सन, ही इज कॉन्शियस ऑफ अवॉइडिंग सिंस. बोलता है नहीं मैं पाप नहीं करूंगा. एन एग्जांपल ऑफ डेमोनिक इज दुर्योधन. ऑलवेज उसके माइंड में क्या चालू है, नहीं 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 मुझे खत्म करना है इन सबको, मुझे एंजॉय करना है, आई वांट वर्ल्ड, मुझे किंग बनना है. और डिवाइन का एग्जांपल है युधिष्ठिर महाराज. तो इफ यू ऑल नो अबाउट महाभारत, आप लोगों को ये दोनों को एग्जांपल एग्जैक्ट क्लियर हो गए होंगे. और अगर आपको नहीं पता है, स्टिल आई विल से पांडवास के जो सबसे बड़े भाई थे, दैट इज युधिष्ठिर, और राइचियसनेस के लिए ही वाज वेरी फेमस, ठीक है? नाउ कमिंग टू गॉड, अगर some people say God is light, some people say is God energy, God कोई एनर्जी है. तो लाइट एनर्जी ऐसा, see there has to be somebody energetic. एनर्जी अपने आप ऐसा कोई ऐसे गोला नहीं है, कुछ मसल का गोला या ऐसा कोई गोला नहीं है. एनर्जी इज अ पर्सन who is energetic, pulls, like for example वो जो वेट लिफ्टर होता है वो पुल करता है ना, उसको वेट को ऐसा ऊपर करता है. सो वेट को ऐसा ऊपर करने वाला एक पर्सन अलग है, उसका एनर्जी अलग है. तो सिमिलरली गॉड एक्चुअली इज अ पर्सन, ठीक है? गॉड इज नॉट एनर्जी. फॉर एग्जांपल हम देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट के पीछे कोई पर्सन है जो उसको मैनेज कर रहा है, करेक्ट? कोई एनर्जी से नहीं होता मैनेज. आई थिंक ऐसा कोई पर्सन, एवरीथिंग हैज अ पर्सन. कंट्री है, इट इज गवर्न्ड बाय इलेक्टेड पार्टी. अल्टीमेटली एक पर्सन होता है उसको हेड करने वाला. ऐसे ही कोई अपने आप कोई चीज नहीं हो रही है इस वर्ल्ड में. तो ये इतना बड़ा यूनिवर्स है, सब चल रहा है, मिलियंस ऑफ प्लैनेट्स है जो कभी एक दूसरे से कोलाइड नहीं हो रहे बाबा. जिसको हमारे अर्थ से आज तक ऐसा कोई आके बाबा आके, जैसा हमें डर नहीं रहता कि रात को सो गया और कल सवेरे ऐसा नहीं हो जाए कि सन हमारे, हम सन से कोलाइड हो जाए, या जुपिटर आ जाए, या मार्स आ जाए, ऐसा कोई कोलाइड हो जाए. बिकॉज somebody is there who is organizing. ये सारा ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहा है, there is somebody, ठीक है? who is that person behind this? We should understand that. ये इंटेलिजेंट पर्सन शुड थिंक अबाउट these things. सोचना कोई ऐसे मन घड़त चीजें नहीं है. बेटर, इट इज बेटर टू थिंक लाइक दिस देन टू थिंक अबाउट एनी फिक्शनल थिंग्स. कृष्णा सेज अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता. I am the source of all spiritual and material worlds. Everything emanates from me. Wise perfectly knows this, engages in my devotional service and worships me with all their heart. Krishna says in Bhagavad Gita कि ये जो सब कुछ है, जो spiritual material जो सारे worlds है, ये मुझसे आ रहे हैं. ये they are coming out of me, and the person, wise person who knows me, knows this, he becomes my devotee, he comes to me. Then another shloka. See, we are quoting from Bhagavad Gita exactly. I am telling nothing from my heart, from my mind. Okay. 15.6 Bhagavad Gita says, "Tad bhashayate suryo na shashanko na paka gatpana nivartante namam paramam mama." Krishna says there is a supreme abode of mind. ठीक है? वहां पे sun, moon इस सब का नहीं जरूरत पड़ता. It is self illuminating. ठीक है? reaches, one who comes there, he does not actually come back in this material world. So Krishna is telling about spiritual world also, जिसके बारे में हम अगले सेशंस में देखेंगे. So God also has his own territory, ठीक है? And that's why whenever God takes birth, हम क्या बोलते हैं? अवतार, है ना? अवतार वर्ड. अवतार का मीनिंग क्या होता है? अवतरण. Somebody coming from up to down, उसको बोलेंगे अवतार.
God comes on this earth, that is called avatar, but he has his own abode. ऐसा नहीं कि यहाँ पे आके he is somewhere here only energy and he takes a form. No, he is having his abode and he comes here and stays for some time. In the battle of Kurukshetra, अर्जुन बहुत स्ट्रेस कंडीशन में चले गए थे. He was actually thinking that मैं ही कंट्रोलर हूँ, मैं फाइट करूंगा तो ही होगा सब. And he was thinking like that. He was having his own ideas कि ये बैटल से क्या होगा, बैटल फाइट करने पे ऐसा होगा, मुझे ये नहीं करना चाहिए, मुझे वैसा. He was not thinking about his duties, so he was having all these arguments. ठीक है, but then what happened is he was devotee of Krishna. He was friend and devotee, and this, when Krishna understood this, then Krishna immediately, as a well-wisher, started guiding Arjun. He started guiding here. Follow me. You follow what I am. You are soul. You are part of me, and then you are part of God. And you have to surrender to me. So हमारे वर्ल्ड में, इस वर्ल्ड में जब हम सरेंडर बोलते हैं तो हम थोड़ा सा, हमें क्या लगता है सरेंडर करना है, जैसे टेररिस्ट सरेंडर कर रहा है, ऐसा हाथ ऊपर कर दे, बोलते हैं मुझे छोड़ दो, मैं अपने गन ड्रॉप करता हूँ, फिर पुलिस वाले आते हैं उसको मारते. ऐसा सरेंडर, यहाँ लव वाला सरेंडर होता है, लव वाला सरेंडर. लाइक फॉर एग्जाम्पल, चाइल्ड है ना, पापा बोलते चलो बेटा मैं तुम्हें घुमा के लाता हूँ, तो चाइल्ड एकदम से पापा के कंधे पे बैठ जाता है, चलो पापा. फिर दोनों जाते हैं, पापा बाइक ले जाते हैं, उसको घुमा रहे हैं, कहीं पे जूस पिलाया, कभी होटल में कुछ खिलाया, कभी चॉकलेट दे दिया उसको. तो दैट इज एक्चुअली हैप्पीनेस फॉर द चाइल्ड. मगर कोई चाइल्ड क्या बोलता है, मुझे इधर ही जाना है, मुझे मैकडोनल्ड ही जाना है, मुझे यही खाना है, यही. So that is not actually a thing. Correct? Love है, surrendering means what? With love we surrender, and the person, we have full faith in that person. Whatever I want he will give to me, whatever I like or whatever he gives, that is best for me. ये हमें समझना चाहिए. ठीक है. So Krishna says that one who surrenders unto me, what I give is, Krishna says, one can become free from all sufferings, ultimately attain the spiritual world. This world may we can remain happy, at the same time ultimately we go back to spiritual world. So Bhagavad Gita 18.78, this is approximately last shloka of Bhagavad Gita. ठीक है, almost last वाला है. यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर शरीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम. Sanjay says, wherever is Krishna, where there is Arjuna, there is always opulence. Shri Vijaya Bhutir Dhruva Nitir Matir Mama. So he's telling opulence, victory, extraordinary power and morality. ये चार चीजें होती है जहाँ पे God होता है. So always there is power, there is victory where there is God. ठीक है. पांडव कितने थे? 5 पांडव थे, and Kauravas were 100. But yet Pandavas won. Why? Because they had Krishna. They followed dharma. They had Krishna on their side. Before war, Krishna, there were 2 options. Okay. Krishna would fight, Krishna would not fight, and उनका जो सेना है जो फाइट करने वाला था, 2 ऑप्शन थे. दुर्योधन ने क्या चूज किया? कृष्ण का सेना चूज किया. अर्जुन ने चूज किया कृष्ण को. Although Krishna said, I will not take any weapon, but still Arjun chose Krishna. Why? Because he knew that wherever there is Krishna, there is always victory. Wherever there is God, there is always victory. So we should actually follow the footsteps of Arjun to become successful in our life. We may fight like Arjun, we may fight like Duryodhan was also there. He was also fighter. Bhishma was there, but there are other fighters also. जो बहुत Karna was also great fighter. ठीक है, many fighters were there. But why Arjun we are saying? Because he followed dharma. He followed God. Okay? And Lord Krishna is Bhakta Vatsala. If we person of this world, we surrender to many people, boss, our leader, or whatever, we surrender to many people in this world, but all of them, they are temporary people. Okay? They can die anytime. They have their own selfish agendas. But God is actually protector of his devotee. When we pray, the mercy descends down. So this is like Draupadi का जब वो Draupadi का वस्त्रहरण हो रहा था, at the time Pandavas they could not do anything because उन्होंने सब दे दिया था. Now they could not do anything. वो कुछ नहीं कर सकते थे. So at that time Draupadi started chanting, "Oh Krishna, please come, please protect me." So immediately Krishna was taking at that time lunch in Dwarka. Okay, he was taking lunch in Dwarka, and immediately he put his plate aside. And then Rukmini asked, "What happened? What happened, Swami? Why? What happened?"
Why you stop? So Krishna said, emergency, my devotee is calling me. Immediately he left. वहां से गायब, and then Krishna came here in front of Draupadi. When prayers goes up and blessings come down, Krishna immediately came and helped Draupadi. So this is Krishna who loves. That's why our dharma is loving service to that God who is supreme. ठीक है, हमारा धर्म है ना. धर्म का मीनिंग क्या होता है? धर्म वर्ड का मीनिंग दैट इज हमारे एक्चुअली हमारे क्वालिटी एक्चुअली क्या है, हम आगे देखेंगे उसका एग्जांपल. एवरी लिविंग बीइंग रेंडर सर्विस टू समबडी. जैसे आई वाज टेलिंग ना कि हर आदमी इस वर्ल्ड में है वो किसी न किसी का सर्विस करता है. जैसे वेटर है वो लोगों का सर्विस कर रहा है, टीचर है बच्चों का सर्व कर रहा है, मदर है अपने बच्चे को सर्व करती है, ये कैट है उसको वो लड़की सर्व कर रही है, डॉक्टर्स आर सर्विंग द पेशेंट. तो एवरीबडी इन दिस वर्ल्ड किसी ना किसी को सर्व कर ही रहे. आप नहीं बोल सकते, कोई ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं किसी को नहीं सर्व करता इस वर्ल्ड में. नो, ना भी बड़ा कंपनी वाला हो, यू मे बी धीरूभाई अंबानी और यू मे बी टाटा बिरला व्हाटएवर, बट यू आर सर्विंग समबडी. ठीक है, वो फादर है, वो घर पे आके चाइल्ड के सामने, वुमन के सामने, अपने वाइफ के सामने वो सरेंडर कर देता है ना. ही इज सर्विंग देम, फॉर देम ही इज डूइंग. एवरी पर्सन एक्चुअली इज डूइंग फॉर देम. आई हैव सीन मेनी बिजनेसमैन, big businessmen, and they're falling at the feet of doctor during this covid time. They were falling at feet of doctor. डॉक्टर मुझे बचा लो, डॉक्टर मेरे घर वालों को बचा लो. ठीक है, तो एक्चुअली वो तो एक वो तो अलग हो गया, बट जस्ट सर्विंग, वी सर्व एवरीबडी. आप अगर सोचोगे ना मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किसको वर्क कर रहा हूँ, तो वी आल्सो एवरीबडी इन दिस वर्ल्ड इज सर्विंग समबडी. बट इस वर्ल्ड के जो सर्विसेज है वो डेथ के साथ खत्म हो जाते हैं. दे आर टर्मिनेटेड विद डेथ. हर आदमी इस वर्ल्ड में किसी न किसी को लव करता है. जैसे वो चाइल्ड देखो, यू लव योर पेट. ठीक है, हर एक का कोई ना कोई सेंटर होता है, रिलेशनशिप है, लव है, हम किसी को देते हैं. बस इस वर्ल्ड का जो लव है वो टेम्पररी होता है. हाँ, कोई ग्रैंड डॉटर है अपने ग्रैंड फादर को लव कर रही है. ठीक है, बॉय लव्स गर्ल, मदर लव्स चाइल्ड, एक किटन है या वो कब है, लायन को वो लव कर रहा है. तो एवरीबडी लव्स, बट इस वर्ल्ड का जो लव है वो टेम्पररी है. We have to understand that. Okay, but वो जो love है, that tendency, love and serve is in everybody. Every living being, जो every person in this world, उसमें वो tendency है. वो tendency कहाँ डालना है? Temporary चीज में डालना है या permanent चीज में डालना है? That is actually we should think about that. हमारा धर्म as a soul क्या है? धर्म का मतलब क्या होता है? नेचर. जैसे शुगर का नेचर है स्वीट है. ठीक है, नेचर ऑफ धर्मा क्या है? सॉल्ट का सॉल्टी है. आइस का क्या होता है? धर्मा कोल्ड है, कोल्ड. वाटर का धर्मा क्या है? लिक्विड. तो दीज आर ऑल धर्मा. ये सब उसका क्या है? तो उसका हम बोलेंगे नेचर है ये सारी चीजों का. तो ये सब नेचर है. तो व्हाट इज नेचर ऑफ सोल? आपने पहला सेशन अटेंड किया, करेक्ट? सो यू मस्ट बी नोइंग दैट यू नो आवर बॉडी, वी आर एक्चुअली सोल्स विद दिस बॉडी. एक्सटर्नल बॉडी है, अंदर सोल है. तो सोल का नेचर क्या है? तो सोल का नेचर है टू सर्व गॉड विथ अनकंडीशनल लव. दैट इज एक्चुअली नेचर ऑफ सोल. एंड व्हेन वी डू दैट, देन वी गेट सेटिस्फैक्शन. कभी आपने ऐसा सोचा नहीं? डोंट नो आपने सोचा क्या, लेकिन मैं तो सोचता था. व्हेन आई वाज इन माय कॉलेज डेज, आई यूज्ड टू थिंक मैं ये कॉलेज क्यों कर रहा हूँ, एंड जॉब करने के लिए, फिर उसके बाद पैसा कमाऊंगा और बहुत खुश रहूंगा इस वर्ल्ड में, ऐसा. फिर मैं सोचता था बाकी बहुत सारे लोग हैं जो जॉब कर रहे हैं लेकिन वो पैसा भी कमाए लेकिन वो फ्रस्ट्रेटेड है. देन मैं सोचा था देयर इज अनदर फ्रेंड ऑफ माइन, वो फिल्म्स या मूवीज में एक्टिंग वगैरह करना चाहता था. तो मैं बोला वो खुश रहेगा क्या? लेकिन देन आई थॉट बहुत सारे एक्टर्स है जो ड्रग्स ले रहे हैं, रो रहे हैं, मर रहे हैं, सुसाइड कमिट कर रहे हैं. सो दे आर आल्सो नॉट हैप्पी. व्हाई एक्चुअली पीपल, ऑल्दो दे हैव रीच्ड टू द टॉप मोस्ट, जिसके लिए हम ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, जो चीज के लिए हम ट्राई कर रहे हैं इस वर्ल्ड में अभी, वो सब उस पे पॉजिटिव, बट दे आर नॉट सेटिस्फाइड. व्हाई? बिकॉज उनका जो धर्म है टू सर्व लव गॉड, वो गलत जगह पे डाल रहे हैं. If you put it wrong place, you don't find satisfaction. जैसे लॉक चाबी है, आपके पास की है, लेकिन वो कौन से लॉक की है? जिस लॉक में डालेंगे बराबर अगर परफेक्ट लॉक है, then it will open. So similarly, our dharma is to love and serve God. So that relationship with God actually is called, it is called as Sanatan Dharma. इटर्नल धर्म. हमारा इटर्नल जो लव है, इटर्नल लविंग सर्विंग प्रोपेंसिटी, रिलेशन विद गॉड, दैट इज एक्चुअली धर्म ऑफ सोल. और अगर हम वो करते हैं, देन एक्चुअली वी बिकम हैप्पी. ठीक है,
दिस एग्जांपल ऑफ हियर एक दो सिंगर्स थे, जॉन एंड डैन, दो सिंगर्स थे इसमें। ये दोनों बहुत अच्छे सिंगर थे। उसमें जो डैन था, एक बार क्या हुआ, उसको एक्सीडेंट हो गया उसका, और वो अपना सब याददाश्त भूल गया। मूवीज में देखते हैं ना हम लोग, एमनेशिया बोलते हैं उसको, याददाश्त भूल जाना। तो वो एमनेशिया में चला गया, वो भूल गया सब कुछ। अभी वो सब कुछ भूल गया, वो एक्सीडेंट हो गया, लोग उसको लेके गए हॉस्पिटल में। अब हॉस्पिटल में उसको कुछ याद नहीं आ रहा है, ठीक है। उसको उसका नाम भी याद नहीं, उसका मोबाइल नंबर भी याद नहीं, और वो बहुत फेमस सिंगर है, लेकिन किसी को पता ही नहीं। 2 साल हो गए वो वहीं पे था। देन 2 साल बाद में एक औरत थी, वो बोली कि डॉक्टर थी, वो बोली मैं इसको ट्राई करती हूँ उसको वापस याद दिलाने का। वो बहुत कुछ कर रही है उसको याद दिलाने की, याद करो, रोज उसके कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट करे, बस उसको कुछ भी याद नहीं आ रहा है। बट वन डे व्हाट हैपेंड इज, उसके पास रेडियो था, वो रेडियो में कुछ गाने सुन रही थी। वो गाना बजा, एक गाना बजा, और इमीडिएटली वो गाना सुन के क्या हो गया, डैन इमीडिएटली रिमेंबर्ड, ही सेड अरे ये मेरा है सॉन्ग, मैंने गाया हुआ है। तो वैसा जब वो डैन ने बोला, इमीडिएटली बोली ये तुमने गाया है, बोला हाँ। फिर जब उसने पता किया सब कुछ, और फिर इसको डैन को भी सारी चीजें याद आ गई, रिमेंबर्ड ऑल द थिंग्स, ठीक है, सब चीजें एक एक करके उसको डैन को याद आ गई। तो लाइक दिस एक्चुअली वी आर पार्ट ऑफ गॉड, आवर रिलेशनशिप विद गॉड इज इटर्नल, बट वी मे नॉट रिमेंबर इट राइट नाउ। अभी हमें लग रहा है हम याद नहीं, बट व्हेन यू कम इन कांटेक्ट विद गॉड, व्हेन यू लव हिम, व्हेन वी सर्व हिम, देन वी रिमेंबर ऑल द थिंग्स, then we remember the spiritual world, then we remember his pastimes, ठीक है। इस वर्ल्ड के जो टेम्पररी रिलेशनशिप है ना, कोई स्पाउस सेंटर्ड होता है, कोई फैमिली सेंटर्ड होता है, मनी सेंटर्ड होता है इस वर्ल्ड में, पैसा 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 पैसा। कोई होता है वर्क सेंटर्ड, कोई होता है पोजीशन चाहिए, बंगला गाड़ी, कोई खाना पीना सेंटर, कोई पेट सेंटर होता है, एनिमल के पीछे उसका दिन रात ना सब कुछ पेट सेंटर्ड हो जाता है। ये सब कब होता है, व्हेन वी एक्चुअली फॉरगेट आवर एक्चुअल रिलेशनशिप विद गॉड। दिस इज द मेन होम थिंग जो आप आज घर ले जा सकते हैं। आप इस पे सोच सकते हैं कि मैं कौन से सेंटर रख के अपना लाइफ को घुमा रहा हूँ, पैसे को रख के घुमा रहा हूँ, पेट को रख के घुमा रहा हूँ, व्हाट थिंग है नो, कौन सा सेंटर है। बट एक्चुअली द सेंटर शुड बी व्हाट, फ्रेंड एनिमी सेंटर्डनेस, नो, center should be God. If we live God centered life, although we are working in Microsoft, we are having our own business, or you become the richest man in the earth, but then you understand my relationship with God is eternal. Okay, I have to love him, serve him, then you love him, you love society, then you serve people, you do your spiritual practices, ये सब चीजें आप करोगे कब, you have God centered life. So we are not God, we are gods. Okay, ये PM है छोटा सा, I am a tiny jiva, not the ultimate God, but a tiny part and parcel servant of the Lord. मैं एक सोल हूँ, ठीक है, but I am part of God. I am not ultimate God. Some people actually say, आप ये मंत्र बोलो मैं आपको भगवान बना दूंगा। उसको एक काटा मारना है, बोलो मैं भगवान कैसे बन सकता हूँ। एक है समुंदर और एक है समुंदर की बूंद, एक है सन और एक है सनलाइट, छोटा सा एक सन का रे, ये एक कैसे हो सकता है। Similarly, we cannot actually become God, but we are part of God. It's not that we are totally different. We have the qualities of God. Quality में we are same with God, but in quantity, God is supreme, and that's why हमने जो बोला पहले डिस्कस किया, God is boss and we are das. Like we are His servants, we are His part, we are meant to serve Him. We have to understand. So I am a tiny part and parcel servant of the God. Leaving Lord's company, forced to be born in pain, in the world filled with agony again and again. God को छोड़ के फिर से मैं इस वर्ल्ड में आ गया, again and again I am taking birth. Krishna is my Lord, source of all existence. His form is imperishable, full of 6 opulences. So 6 opulences हमने आज देखे, beauty, fame, strength, renunciation, wealth, और 6 कौन सा था, जो 5-6 हमने देखे, वो all those 6 opulences of God है ना, money, beauty हो गया, strength हो गया, power, fame, knowledge, yes, knowledge, 6 opulences of God. Then he pays a visit to this world out of his own sweet will to please and protect his devotees and punish the evil. I can make a swimming pool, God creates ocean, I can fly a rocket, but Lord floats his, sorry, ठीक है, ये रह गया था, I am only Brahman, but Krishna is para Brahman. My power is limited, his potencies are unlimited. I can make a swimming pool, God creates ocean. I can fly a rocket, but God floats all huge planets. I can invent a dome light, but God creates moonlight.
We make ordinary dolls, but the Lord made us all. Lord is the actual doer, and just an imitator. Lord is omnipresent, omnipotent, and omniscient. Who deserves everyone's love? Humble service. I am a tiny jiva cast in oceanic material world. मैं इस वर्ल्ड में हूँ, and God actually requires service. Lord is the greatest of all. Let us accept this fact at heart. We are His tiny servants. Let's realize and serve Him with joy. How? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So this is the mantra. In last session, you might have heard about this mantra. It has been told to you this mantra. What is speciality about this mantra? Our session has ended now. Yeah, we'll take questions, but just I will tell you importance of this mantra first. Actually, this mantra is given in Kali Santan Upanishad. एवरी पर्सन आप इस वर्ल्ड में देखोगे उसका कोई ना कोई मेडिटेशन या कोई ना कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस होना चाहिए. और एवरी ग्रेट पर्सनालिटी, फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई पीपल डू सच थिंग्स? टू calm the mind, to have some spiritual thing in their life, है ना, to develop some relationship with God. So if you want to have some meditation in your life, best is mantra meditation. Why so? Because mantra मीनिंग क्या होता है? वन विच मन त्रायते इति मंत्र, वन एक्चुअली विच डिलीवर्स माइंड, आपके माइंड को डिलीवर करना. जैसे हम स्टार्टिंग से जो मैं आपको बोल रहा था ना कि सेंसेस, वो ट्रेन वाला एग्जांपल ले लो, भज्जी वड़ा. आप बोलोगे सर भज्जी वड़ा क्यों बोल रहे? मेरे दिमाग में वो एग्जांपल, भज्जी वड़ा वाला एग्जांपल, भेल वाला, बस व्हेनेवर आई ट्रैवल उनका स्मेल आता है. करेक्ट? सो उस तरह ऐसे बहुत सारी चीजें, लाइक बॉयज दे गेट अट्रैक्टेड टू गर्ल्स. Person might be saying, I don't want to get attracted. I want to focus on the things. There is YouTube, there is Facebook, there is Instagram, और बहुत सारी चीजें इस वर्ल्ड में, कितनी सारी चीजें जो हमारा माइंड को है ना अलग अलग जगह पे एंगेज करके रखती है. तो ये सब चीजों से ना उसको प्लग आउट करना है, ये सब चीजों से उसको निकालना है. फॉर दैट एक्चुअली वी हैव टू प्रैक्टिस सम मेडिटेशनल टेक्निक. कुछ तो हमारे लाइफ में मेडिटेशन ऐड करना है. एंड दिस मंत्र इज अ डिवाइन, इज अ सब्लाइम वाइब्रेशन. It's not a vibration of this world. It's sublime vibration. If we chant this mantra, what happens is we hook our mind to the mantra instead of all the things in this world. Mind 10 जगह पे है, यहाँ वहां से लो उसको खींचो और put it on mantra. When we actually chant, okay? And then when we put it on the mantra, what happens is mantra is spiritual. When we come in contact with mantra, mind and mantra both becomes one. Okay? माइंड मंत्र के साथ क्या हो जाता है? कंबाइन हो जाता है. एंड द सैटिस्फैक्शन एंड द हैप्पीनेस एंड द पीस ऑफ माइंड वी गेट एट दैट टाइम, दैट टॉप मोस्ट. कोई मेडिटेशन टेक्निक आपको इस लेवल तक लेके नहीं जा सकता. ठीक है? वुड यू लाइक टू ट्राई? इफ यू ऑल आर एट प्रॉपर प्लेस, हमारे पास में अभी भी 5 मिनट्स है. वी हैव जस्ट 2 मिनट्स ऑफ दिस मंत्र मेडिटेशन हम लोग करेंगे. बट आपको क्या करना है? फोकस करना है. अगर आप कहीं बाहर है, रोड पे है, स्ट्रीट पे है, तो आई डोंट थिंक हाउ मच यू कैन डू इट. बट दोज हु आर एट होम और सिटिंग एट सम प्लेस, शांत थोड़ा सा, व्हाटएवर whoever are near you, ठीक है, जस्ट क्लोज योर आईज एंड विल चैंट फॉर जस्ट 2 minutes. ठीक है, 1 or 2 minutes विल चैंट. So this mantra, everybody has to focus. Just 2 things should happen. One is we are speaking and second we are hearing. बस ये 2 चीजें होनी चाहिए. ठीक है, for next 2 minutes. Let us chant. First you repeat after me one mantra and then we'll start. कौन सा मंत्र? इसके पहले एक मंत्र बोलना होता है, वो मंत्र मैं आपको बताता हूँ. जय श्री कृष्ण चैतन्य, जय श्री कृष्ण चैतन्य, प्रभु नित्यानंद, प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. ठीक है. नाउ ऑल विल चैंट टुगेदर फॉर 2 minutes. ठीक है. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Okay, so just a second. Yeah, so I hope all of you tried it with me, and with this chanting after once, with this chanting, we understand that how, as many of you might have got experiences, that mind actually stables down. We immediately feel peace and we feel connected. So the mantra actually makes us love God, makes us develop relationship with God. Okay? So that is the power of this mantra. So I hope everybody of you will give some time daily for chanting this mantra. So okay, so if anybody of you have any question, we will allow you have to raise your hand and then we can do that. Correct, na Sachin sir? Yes, so first I would like to thank Amit sir for giving his valuable time. I know him personally, and that's why I know how busy he is. And also we had scheduled another speaker, Akshay sir, but he had some emergency. So on time we inform Amit sir, and he kindly agreed to give his valuable time. So thank you very much, sir, for enlightening us and all the students. So now we will have some question answers. So if any one of you have the questions, then you can raise hand and unmute yourself. And after that, we will take the questions which are posted in the form. And I am also pasting the test link. So those who don't have questions,
they can attempt the test also. Okay. So yes, Sagar, you can unmute yourself and ask your question. Yeah, Sagar has typed the question also to me. We'll read the question. Did you know about law of attraction? It is mentioned in Bhagavad Gita as well. And does it have any scientific explanation? So very important question, Sagar. See, this law of attraction actually is says that, first of all, those who don't know, there is a book called as Secret करके कोई book है, that it is written. So the law of attraction actually says that when you ask for something, when you want something, आप उसके लिए रोडा ब्राइन का book है The Secret, correct? When you ask for something with your heart, then all the energies and nature actually supplies you that. Right? So ये law of attraction जो part है, there is one thing which is actually correct. Actually, when we develop attraction for something, when we want something very strongly, then it gets registered. That is there. But then there is another thing which Bhagavad Gita tells, the next level. Law of attraction वाला part तो है, ठीक है? आप किसी चीज को अगर desire करते हो, then you are meant to have that right now or later or whatever. आपके पीछे वो चीज को help करने के लिए हो जाएगा. Your Prakriti will try to provide. But there are three things. Not just, we are not just the one in all. There is God which is residing within our heart, and there is Prakriti. ये तीन चीजें हैं. मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ, ठीक है? ठीक, अभी कोई अपना स्किल मत बताना, इसके ऊपर एनोटेट मत करना. There is God here, for example. Okay, there is soul here, and then there is Prakriti here. Okay, so God में यहाँ पे chat वाला, yes, it is there. Yeah, ठीक है. God. Wait a minute. There is God. There is soul, and then there is nature or Prakriti. प्रकृति, ठीक है? So ये तीनों लोग होते हैं कोई भी चीज को फुलफिल करने के लिए. Like for example, soul says, you know, I want crores of rupees. I want money. I want to eat some apple. Suppose, for example, as simple as apple, because I have apple with me here. Okay, so so apple. Soul wants apple. Somebody wants apple, or he desires for something very strongly. Now that apple has been will be provided to him by Prakriti. But then there is God in picture. Okay, God is also in picture. तो जब आप बोलते हैं God is in picture, तो ये जो God है, he knows your past life karma. ठीक है? Past life karma एक होती चीज, very important thing. Past life karma, who knows? God knows, and accordingly, what God does is, if it is there in your karma, then you get it. Then God gives, sanctions it. Like for example, soul says, I want apple. If it is there in his karma, then God sanctions, and then Prakriti provides. तीन लोग हैं उसमें. Soul wants big bungalow, car, whatever. It is in his karma, then God actually sanctions it. Prakriti provides everything. Whatever we get is from Prakriti, but there is a sanctioner, God also. Many people forget that. See, like for example, many people wanted to marry Aishwarya Rai. For example, I'm telling. Okay, many people wanted to marry Aishwarya Rai, but only one person married her. Correct? Abhishek Bachchan, he married her. Correct? So many people might have thought about her कि मुझे वो चाहिए, I want to marry her, है ना? But क्या हुआ? सबको नहीं मिला. तो किसको मिलता है? Who gets it? Like for example, हम बोलेंगे कि सब लोगों को सब चीजें नहीं मिल सकते. If it is there in karma, then we get it. So law of attraction के साथ में एक और law है, that is law of karma. ठीक है? These two laws, law of karma भी है, law of attraction भी है. तो ये important है कि वो soul, आपका जो law of ये है, क्या बोलते हैं, आपका जो attraction है, उसके साथ में आपका law of karma भी चाहिए. Then you get it. Otherwise, even though a person may want to do something or want to have something, but if there is no sanction,
then he won't get it. That's why many people ये law of attraction को practice करते हैं वो, लेकिन उसके बाद वो frustrate हो जाते हैं क्योंकि उनको वो चीज मिलती नहीं है. So we have to accept that there is karma also and there is God also who is in picture. So ये तीनों चीजें भगवद गीता tells about these three doers. तीन डुअर के बारे में बोलते हैं, एक है गॉड, दूसरे प्रकृति और तीसरा सोल. तो सम दीज बुक्स जो लोग ये लोग लिखते हैं ना, दे डोंट हैव कंसेप्शन ऑफ गॉड, दे डोंट हैव एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ भगवद गीता. सो इसलिए ना इनकम्प्लीट होते हैं सम बुक्स and they give incomplete information about this law of attraction. I hope it is clear. Any other question? Yeah, thank you, Amit sir. Any other question? They can raise hand or they can directly unmute themselves. They can raise hand, then we will unmute them. Okay, Sagar. Okay, so some of the questions we have in the sheet also. So if there is no one here, so I will read the questions from sheet. So one student is asking, today I have slept for 12 hours overall without any control. So how can I control it? Okay, controlling sleep. Okay. So this question actually is very important. अगर हम हमारे टीम को कंट्रोल करना चाहते तो first of all, when we have some in our life, then we work for that purpose. Businessmen actually work for 20 hours, 20 hours at a stretch. Continuously 20 hours work कर रहा है, फिर 2 घंटा 3 घंटे सोते हैं, फिर again they are working so hard. So sometimes I think why they are working. If you think क्यों इतना work कर रहे हैं, so he has some purpose in his life. वो purpose है, इसीलिए इतना hard work कर रहे हैं. There are some scientists जो lab में जाते थे दिन भर, वो खाना ही भूल जाते, खाना खाना ही भूल जाते थे. टिफिन ले लिया है, टिफिन लेके आया लैब में, लेकिन इवन आइंस्टाइन के बारे में मैंने सुना था, उसका टिफिन आता था, टिफिन बाहर ही रहता था. अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम also I heard about him also. So if these people they have purpose, then अगर आपके purpose है कोई ना, then you won't what we say have anything else to think about. You don't want to waste your time. आपका टाइम कहाँ डालना है वो आपको क्लियर होता है. तो फर्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू टेल इज दैट आपको यू हैव टू मेक योर पर्पस वेरी क्लियर. लाइफ में जो गोल है ना वो क्लियर करना बहुत जरूरी है. यू वांट टू बिकम, को लिस्ट डाउन करो. आई वांट टू बिकम दिस, आई वांट टू वर्क फॉर दिस, मेक इट अ हैबिट. एंड सेकंड थिंग इज यू हैव टू ब्रिंग अवर लाइफ टू गुडनेस, मोड ऑफ गुडनेस. मोड ऑफ गुडनेस होता है, दैट इज भगवद गीता टेल्स अबाउट दैट मोड ऑफ गुडनेस. दैट मोड ऑफ गुडनेस कैन बी डेवलप्ड बाय स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, बाय चैंटिंग द मंत्रास. ठीक है, जैसे हमने हरे कृष्ण महामंत्र चैंट किया, ठीक है, वो मंत्र चैंटिंग करने से, बाय गोइंग टू टेंपल, बाय ईटिंग हेल्दी फूड्स, फ्रूट्स, मिल्क, हेल्दी फूड. अगर आप नॉन वेजिटेरियन फूड खा रहे हैं और रात को 12 बजे 1 बजे कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, तो आप हाउ यू कैन कंट्रोल योरसेल्फ? यू हैव लॉस्ट कंट्रोल ऑन योर बॉडी देन. तो हमें ऐसा फूड खाना चाहिए which brings mind to peace, which gives happiness. जैसे सात्विक फूड होता है, गुडनेस वाला. वी हैव टू ब्रिंग अवर लाइफस्टाइल टू दैट. सी हम लोग अगर दिन रात अगर बेड पे ही पड़े रहे, सोफा पे ही पड़ा रहा, दिन रात रूम से बाहर ही नहीं निकल रहे, सुबह का सूरज ही नहीं देखा है, रात को लेट 1-2 बजे 3 बजे सो रहे, हम क्या करते हैं, खुद को पूरा जो नेचुरल वे है सन का, उससे क्या करते हैं, हम डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं. नेचर के हिसाब से वी शुड स्लीप अर्ली. करेक्ट, लाइट ऑफ हो गया खत्म, सनलाइट चला गया, अंधेरा हो गया खत्म, डेली वी शुड स्लीप 6-7 बजे तो नहीं, 8-9 बजे तो सो जाना, 10 बजे तो मैक्सिमम सो जाना चाहिए. बट अगर हम रात को जाग रहे हैं, हम क्या करते हैं, हमारा जो एक्चुअल क्लॉक है वो पूरा डिस्टर्ब कर देते हैं. एक्चुअली नोबडी कैन स्लीप फॉर 12 आवर्स. आइडियली 6 आवर्स स्लीप इज सफिशिएंट फॉर अस, बट वो स्लीप सही टाइम पे होना चाहिए. इफ यू स्लीप एट 9 o'clock, वी गेट अप एट 3 or 4, सफिशिएंट स्लीप है वो, आपको कोई ज्यादा जरूरत नहीं. इफ यू स्लीप एट 10 and morning get up at 4, perfect sleep है. 9 to 3 or 10 to 4 or 9 to 4, whatever time you can sleep, 6 to 7 hours, perfect sleep है. आपको दिन भर भी नींद नहीं आएगा, you won't feel tired, everything. But then you have to arrange this time for your sleep. This is because, according to Ayurveda, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा, Ayurveda tells that from 9 to 12 वाला जो time है, that is very good for our body for sleeping. It gives 3 hours gives around 6 hours of sleep. उतना बॉडी को रेस्ट मिलता है 6 hours का. तो जितना जल्दी आप सो सकते हैं, if you sleep on time, then you will get up in time, and whole day you will not feel hazy, disturbed, bored. सब चीजें नहीं होगा. And try to develop some spiritual friends. Try to chant, these mantras.
जो हमने आज मंत्र देखा, हरे कृष्ण महामंत्र आपको चैंट करना चाहिए. तो इफ यू इनपुट गुड थिंग्स इन योर लाइफ, स्लोली स्लोली है ना, जो हमारा जो ये है क्या साइकिल है, वो पूरा जगह पे आना चालू हो जाता है. बट इट्स टाइम, एक दिन में नहीं होगा. कल ही एकदम से मैं सपोज चालू कर दूंगा अपना, इट टेक्स सर्टेन टाइम. सो इफ यू आर स्लीपिंग एट 1 o'clock 2 o'clock, तो उसको 12 पे लाओ, 11 पे लाओ, 10 पे लाओ. ट्राई करो थोड़ा थोड़ा चेंज करने के लिए. वट एवर यू आर ईटिंग हैबिट्स पे चेंज करना ट्राई करो. मोस्ट इंपॉर्टेंट इज प्लीज कीप चैंटिंग. ठीक है, चैंटिंग ऐड करो आपकी लाइफ में. और एक जो मैंने गोल वाला बताया, यू शुड डिसाइड योर गोल, व्हाट यू वांट टू बिकम, what you want to do with this your life. See, there is Arjun was a devotee, at the same time he was a fighter also. So a devotee should be a person, ideal person. According to me, ideal person वो नहीं है जिसके पास crores and crores of rupees है. Ideal person वो भी नहीं है जो only spiritual life बोलते, spiritual life का importance बता रहा है, but at the same time he is not practicing anything in his life hard, not doing any hard work for anything, like any purpose in his life, doesn't have any purpose. A person who is practicing spiritual life, at the same time he is perfect in his duties, material duties of this world, that person is perfect. We want to become that. ये जो seminars ये क्यों हो रहे हैं, ये सब आपको उसी के लिए हो रहा है कि that you become engineer, you become scientist, you become topmost businessman and leaders and great personality in this world. But your heart should be very soft, loving God, loving people of this world, serving. You want to serve the people, giving them much knowledge of Bhagavad Gita. तो वैसा आपका हार्ट होना चाहिए. तो इसीलिए ये हम यहाँ पे सेमिनार हम अरेंज कर रहे हैं. ठीक है. Thank you, Amit sir, for this very wonderful answer. And hope the students will apply this in their life. Next question is how to learn Bhagavad Gita. There are, see, I am typing my mail ID in the chat box. आप क्या कर सकते हैं, you can me, मैं आपको एक भगवद गीता, if you want I can send you भगवद गीता. ठीक है, if you don't have भगवद गीता, or else then you can we have certain sessions in which we take भगवद गीता one by one. एक चैप्टर लेते हैं, फिर दूसरा चैप्टर लेते हैं, फिर तीसरा चैप्टर लेते हैं. जो आप में से इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हो गए, those who actually want to give some time for understanding भगवद गीता. भगवद गीता में टोटल 18 चैप्टर्स है, एंड ऑल चैप्टर्स, जो भी चैप्टर्स हम कर रहे हैं, लेते हैं वन बाय वन. तो हर चैप्टर में कोई थीम होता है, हर चैप्टर में कोई ना कोई चीज होता है. लाइक फॉर एग्जांपल जो हम आज देख रहे थे, आई टोल्ड यू अबाउट ट्री, और ट्री का रिफ्लेक्शन इज इन 15 चैप्टर. डेमोनिक क्वालिटीज एंड डिवाइन क्वालिटीज, दैट इज इन 16 चैप्टर. फिर डेथ के बारे में जो चीज है, दैट इज इन 8 चैप्टर. फिर कर्म के बारे में है 3rd चैप्टर, 5th चैप्टर, ये कर्म के बारे में बताते हैं. सागर वाज आस्किंग क्वेश्चन है, जो हमने ये डिस्कस किया ना, गॉड, प्रकृति और ये तो लॉ ऑफ कर्मा, ये सब, तो ये सब उन चैप्टर्स में. तो ऐसे मेनी चैप्टर्स व्हिच आर हैविंग डिफरेंट थीम्स, और हम उसको ट्राई करते हैं एक्सप्लेन करना ऑन द बेसिस ऑफ हाउ स्टूडेंट्स वुड लाइक. तो लाइक दिस देयर आर मेनी थिंग्स. तो इफ यू वांट यू कैन पिंग मी, हम आपको विल ऐड यू टू दैट कोर्स, और वी विल टेक सेपरेटली फॉर यू आल्सो, यू ऑल आल्सो, जो भी लोग इंटरेस्टेड है उनके लिए. यस. Okay, thank you, Amit sir. There is one question, but I'm not clear with the question. I will just read. My friend. Just one more thing. The Bhagavad Gita वाला part, आप अगर serious होंगे, learn, then only you mail me, because अगर आपको ऐसा लगता है ठीक है कभी कर लूंगा, ऐसा नहीं. If you are serious, you want to do it, because then I will plan. अरे हाँ, so many are there, then we want to keep some session for them, and then टाइम. इट्स नॉट एनी चीप थिंग. और भगवद गीता अंडरस्टैंड करने के लिए आपका डिजायर बहुत स्ट्रांग चाहिए. बिकॉज कर रही है, आई एम something a tiny personality, ठीक है, tiny personality like me in this world. I am telling that law of attraction is not 100% confirm, 100% most नहीं है, उसके साथ law of karma भी है. तो मेरे जैसा पर्सन बोल रहा है what quality I have. तो I am actually I am not the topmost or most intelligent person in this world, but it is in Bhagavad Gita, and Bhagavad Gita is topmost in this world. So whatever I tell from Bhagavad Gita, that is perfect. So that's why I could. तो इतना knowledgeable जो चीज है भगवद गीता, ये जिसको एक्चुअली करना है, who has desire, only should mail. Okay, सचिन सर. Yes. और हमारा टाइम, आई थिंक हम टाइम से बहुत आगे चले गए, तो आप एक ही लास्ट क्वेश्चन ले लीजिए, है ना? Yeah, this will be last question. So
he's writing, my friend meets me very rarely and has a view where he says that when we meet after a long time, the other person realizes his worth as well as that meet becomes great. So he has not written anything else. So Raju, are you there? See, You can we- unmute or otherwise sir can take. I think I understood the question. Okay, no problem. You can go ahead, sir. Uh, yes. Uh, See, any two person in this world, they cannot have eternal relationship. ये हमारे हर आदमी में क्या है, हर आदमी में कोई ना कोई कमी होता है. जैसे हस्बैंड होता है, वाइफ होते हैं. हस्बैंड में कोई कमी है, वाइफ को नहीं अच्छी लगती. वाइफ में कोई कमी है, आप आपके पेरेंट्स को देखते होंगे, है ना. आई थिंक नन ऑफ यू आर मैरिड हियर. सो आप आपके पेरेंट्स को देखते होंगे. मदर को वाइफ, फादर से झगड़ा, फादर मदर से झगड़ा करती है, भाई बहन से झगड़ा करता है, फादर सन से झगड़ा करेगा, सन फादर से, मदर डॉटर से, मदर सन से, सब झगड़ा पूरा वर्ल्ड में है ना. नो रिलेशनशिप एक्चुअली कैन रिमेन इटरनली हैप्पी. कोई भी दो लोग है ना, बोल नहीं सकते कि कभी भी हमारे बीच में क्या नहीं होगा, एशेस नहीं होंगे. ऐसा कोई बोल नहीं सकता है इस वर्ल्ड में. तो बिकॉज हर एक में कोई ना कोई फॉल्ट्स है, ठीक है, हर एक में कोई ना कोई प्रॉब्लमेटिक है, और हमारे अंदर वी डोंट हैव दैट लेवल, सी नो फॉल्ट्स इन अदर्स. वो लेवल पे हम अभी तक पहुंचे नहीं. करेक्ट. तो द रिलेशनशिप which satisfies us, and that relationship is with God. It is fully satisfying. जैसे मैंने लॉक और ताला का एग्जांपल दिया ना, एग्जैक्ट लॉक के लिए एग्जैक्ट ही होता है. जैसे हमारे हार्ट को सेटिस्फाई करने वाला, सबसे ज्यादा हैप्पीनेस देने वाला एक ही रिलेशन होता है, वो है दैट रिलेशन इज विद गॉड. तो लाइक फ्रेंड्स इज कि हम बाद में बहुत दिन के बाद मिलते हैं तो हैप्पीनेस होता है. तो एक्चुअली क्या होता है, बहुत दिन के बाद हम किसी पर्सन को मिलते हैं तो उस समय हमें अच्छा ही लगता है. हम सोचते हैं हाँ हमें ओके इतने दिन बाद मिल रहे हैं. But then when we stay with some person, again negative qualities are seen by us, our negative qualities are seen by him, again clashes. So that's why people in this world, they do like this, you know. इसी तरह से मैनेज करना है इस वर्ल्ड में रिलेशनशिप, क्या करो, दूर रहो, ऐसा लोग करते हैं. बट दिस इज रॉन्ग. So you can tell your friend that if we have center as God, God centered अगर relationship है, then that relationship, which because God is most attractive person in this world, हमारा relationship भी attractive होता है. दो लोग हैं ना हम लोग, if God is centered, हमारा ये fight नहीं होगा, it will become a friendly relationship. A friendly relationship होता है लाइफ टाइम के लिए. So I myself, I have observed in my personal, my family life, also was having a lot of arguments in my family and other things before I read Bhagavad Gita, before I came to spiritual life. But then when I started reading Bhagavad Gita and practicing, and in my life, in my family also, all people, everybody chants in my family. We go to temple every Sunday we stay there. Saturday night we stay there Sunday, and whole day we serve in temple. My father, my mother, my wife, all of us like together. So when we serve in temple, we worship God daily. We have daily at our place, like we have a building here, and all our faculty. So we have different flats. So in one flat, all of us come together every week. Many times we all cook together also. So for God, we offer it to God, and then we all take prasad, we all eat. So we all are very happy. Why? Because we are working together. At the same time, we have God in center. Okay, and such kind of relationship will give happiness for long term. आपको दूर जाके खुश रहने की जरूरत नहीं, आप साथ में रह सकते, बट बीच में क्या रखो, God in center. If you have money in the center, you can never remain happy. कोई भी दो लोग है ना हैप्पी नहीं रह सकते, पर पैसा चाहिए दोनों को भी, सिर्फ पैसे के लिए साथ में. दैट्स व्हाई बहुत सारे लोग हैं इस वर्ल्ड में, वो क्या करते हैं, वो साथ में रह ही नहीं पाते. पार्टनर बनते हैं, बिजनेस चालू करते हैं, बट फिर से झगड़ा हो जाता है, फिर से अलग हो जाते हैं. बस मनी है इन बिटवीन. फ्रेंड्स आर देयर, बोथ ऑफ देम लाइक वन गर्ल, दोनों का झगड़ा हो जाता है वो लड़की के पीछे. क्यों हो जाता है? सेम सेंटर गॉड नहीं है रिलेशनशिप का. ठीक है. If you have God as center, your relationship will be very strong, and that's why divorce rate in Vedic times was 0. Divorce rate था ही नहीं. और आजकल आप देख रहे हैं divorce rate क्या है. No, in America every third marriage divorce होता है, every third marriage. तो इतना डेंजर कंडीशन है. मैरिज क्यों करते हैं लोग? बिकॉज दे फील हम लोग साथ में रहेंगे, विल बी वेरी हैप्पी. बट देन सेंटर क्या है? सेंटर होता है मैरिज का सेक्सुअल लाइफ. ठीक है, एक दूसरे को खुश रखना, हैप्पी, पैसा वैसा जो मनी और वट एवर जो भी उनका सेंसुअल वट एवर थॉट्स दे हैव. तो सेंटर इफ इट इज नॉट गॉड, वो रिलेशनशिप स्ट्रांग नहीं रहता. वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट. दिस इज व्हाट आई अंडरस्टूड.
Yeah. Thank you, Amit sir, for wonderfully explaining this concept of keeping God in the center of our relationship, whatever relationship that may be. So we have exceeded our time. So we would like to end here. Thank you, Amit sir, for giving your time, and I thank all the participants. And please, I have posted the link. You can go to that link, and you can attempt the test. Okay. So thank you very much. We will end here.